Namaskar students, this video for class 9th, lesson number 8, framing of Indian Constitution and its features. In previous video we have discussed already total 7 the features of our Indian Constitution. In this video we will study the 3 features number 8, 9, 10 and 11. Sorry, 4 features 8, 9, 10 and 11. So please listen carefully. So the features number 9, the amendment in Constitution. It's a very interesting, the amendments in the Constitution. Look student, many of the students consider that the politics science is a very boring subject, but it is a very interesting subject if you study this politics science and this all the social science with the current topics and with the current example. So you will get the more interest in this subject. So the amendment, what is the amendment? I have already told in my previous video that what is the amendment. Amendment, that is the process to change in the constitution. So our constitution has maker the very biggest live document, the biggest constitution of the world. और उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने सदियों के लिए, आजकल के लिए नहीं, लेकिन ये देश और ये संस्कृति परंपरा सदियों तक चलेगी, इसलिए उन्होंने वो पूरा इस तरीके से बनाया. इसलिए उन्होंने एक प्राविधान करके गए कि if the future generation want to make some changes, so that's why they can make the change in the constitution. So according to the article number 368, the parliament can change some articles in the constitution. Please listen. The parliament can change some articles, different articles in the constitution. Not all articles and all the constitution, but some articles can be changed by the parliament. Here the parliament, that means the two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, that is in the Delhi, that is a parliament. जब भी मैं parliament word use करूं तो आपको ऐसा ही समझ निका, लोकसभा एंड राज्यसभा ये दोनों का कॉम्बिनेशन नेम है संसद, पार्लियामेंट. सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसीजर. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर. व्हाट इज द प्रोसीजर टू मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल अगर बदलना है, कोई चेंज करना है, या तो उसके अंदर अमेंडमेंट करना है, उसको और भी अपडेट करना है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर. सो द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो फर्स्ट it's changed by the simple majority. लोकसभा टू राज्यसभा, टू हाउसेस है, एक बिल पास होता है फ्रॉम द लोकसभा और द राज्यसभा, दोनों हाउसेस में से कहीं से भी एक बिल आता है, सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो गया. प्रेसिडेंट की आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट द अमेंडमेंट कैन बी डन, द चेंजेस कैन बी डन. द चेंज, द अमेंडमेंट कैन स्पेशल मेजोरिटी in the special cases from the union state case, that is a special majority. The special article, that is a regarding about the special articles, कोई बहुत ही बड़ा बदलाव लाना है, कोई स्पेशल आर्टिकल यूनियन स्टेट के रिलेशन के मैटर में कोई बदलाव लाना है, तो इट्स नीड्स द 2/3 majority. Simple majority can be you can say that is a 1/3 majority, but very important article, you have to change a very important article and it is related with the union state matter. राज्य सरकार और भारत सरकार की मैटर उसमें आ जाती है, तो 2/3 majority is needed and also needed the support of the 50% or more than the 50% of the state legislature assembly. जो विधानसभा है, राज्य की विधानसभा, उसकी भी 50% मिनिमम उसके अंदर उसका सपोर्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल कि गुजरात स्टेट मैटर में अफेक्ट करता है, ऐसा कोई आर्टिकल चेंज हो रहा है, तो गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गुजरात विधानसभा की 182 टोटल सीट्स है. द टोटल सीट्स ऑफ द गुजरात विधानसभा, गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज 182. सो मिनिमम 91 मेंबर इज एग्रीड ऑफ दिस प्रपोजल. Look for this example, very interesting and very current example, that is the article 370. You all of you heard regarding about the article 370, that is it is the connected with the Jammu and Kashmir, and article 35A.
and it is very controversial articles of these both article. So let's study with the example, very interesting example of this article. This article is connected with the Jammu and Kashmir state, article 370 and article 35A. So first of all, what had the government made? It is this article passed by in first the Rajya Sabha. What is the normal procedure? From passed to the Lok Sabha, any bill amendment passed to the Lok Sabha, to Rajya Sabha, and after the sign of the president, the amendment can be done. But what is the procedure has done in the article 370 and 35A? First of all, this government has done the sign of the president, has get the permission of the president of the article of the amendment. So one procedure is the completed. प्रेसिडेंट की परमिशन मिल गई कि भाई हम ये प्रस्ताव लाने जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, द अमेंडमेंट, द आर्टिकल रिमूव द 370 and 35A from the constitution of our country. So first of all, in the Rajya Sabha, it is very difficult to pass any amendment and any bill in the Rajya Sabha. Because of the Rajya Sabha, I explained already you, Rajya Sabha has made of the different members of the states. So it is a very difficult that one party majority in the Rajya Sabha. So first of all, this government has passed this bill from the Rajya Sabha. Then after it sent to the Lok Sabha. The उल्टी थोड़ी प्रक्रिया करी ऐसे तो सही है, राज्यसभा से लोकसभा में भी भेज सकते हैं या तो लोकसभा में बिल पास करके राज्यसभा में भी भेज सकते हैं. Generally the bill passed from the Lok Sabha to Rajya Sabha, but in article 370, that is a special types of that is a skill has done by this government. The Rajya Sabha passed by the Rajya Sabha, these both article, that amendment is considered. Then after the Lok Sabha, in the Lok Sabha, this current government has that is the majority in the Lok Sabha. So it is a very naturally this bill is also passed in the Lok Sabha with the 2/3 majority. So after the president permission has taken already, so after the president approval, this article removed from our Indian constitution. So it is very interesting how to remove any article, how to amendments and how to add the articles in our Indian constitution. Not one point, the president can refuse one time any amendment or any proposal or any changes. President एक बार ना बोल सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई अमेंडमेंट हुआ, लोकसभा से गया राज्यसभा से, लोकसभा में से पास हो गया, राज्यसभा में से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया, द रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट. सो दिस बिल मूव्ड टू द ओरिजिनल हाउसेस, जहां से वो आया था बिल, जहां से स्टार्ट हुआ था, वापस वहां पे आ जाएगा. देन आफ्टर द सेम प्रोसीजर, एंड वी विल स्टडी द वेरी डीपली दिस प्रोसीजर in next lesson regarding about the amendment process and the article process. So the second time Lok Sabha has to pass to bill to the Rajya Sabha, then after Rajya Sabha to the president, and second time president cannot refuse any bill. If it comes second time to the president cannot refuse the bill, the amendment and the act. President has to sign on this bill, and then after the bill becomes an act, and whatever the amendment has done, it is approval by the president. So it is a very interesting procedures of. thus हमारे आर्टिकल में से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और अमेंडमेंट हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 368. So the more than 100 amendments have been already done in our constitution. So this is the procedures regarding about the amendment procedure in our constitution. Till you have doubt in this topic, so you can comment me, you can ask me the question in my personal number, also in the YouTube comment. Next, the universal adult suffrage. The next features is the universal adult suffrage. That means a citizen of 18 or 18 years above, the Indian citizen cast their vote without any discrimination. That is the adult suffrage. भारत का नागरिक
और भारत के नागरिक कैसे बनते हैं, वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट पॉलिटिक्स साइंस चैप्टर, दैट इज हाउ कैन बिकम द इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन दैट इज द 18 और 18 ईयर्स अबाउ, 18 और 18 साल की ज्यादा उम्र वाले हर एक भारतीय नागरिक कैन कास्ट देयर वोट इन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन। 3 टाइप्स ऑफ द इलेक्शन: लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन, state election, and Lok Sabha election, general election. 3 types of the election. So as per their norms, the every citizen of Indian citizen of our country cast their vote 18 or 18 years above. So this features is called the universal adult suffrage. Clear? The next feature, that is secularism. This word also we have taught in our preamble of the constitution, also very deeply. The secularism, that means the dharma nirpeksh rashtra. Noted this point, dharma nirpeksh, because the बार ये बच्चे भूल जाते हैं, what is a secularism, what is a integrity, what is a sovereign. तो ये वर्ड आपको मालूम होना चाहिए. As a social science student, as a politics science student, you should aware some, you must know some words of regarding about the politics science. Secularism, धर्म निरपेक्ष. India is a secular country. भारत ने कोई एक राष्ट्र धर्म नहीं बनाया. Any person of our country can choose their own religion, own sect, own language, and whatever he likes. The state government doesn't interfere. The state government also has provided some facilities to the particular religion because of that is the minority caste. So secularism, that means धर्म निरपेक्ष राष्ट्र. ये भारत का कोई एक राष्ट्र धर्म नहीं है. यहाँ पे सब लोग, इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, ऑल ऑफ यू नो. भारत एक बहु धर्म, जैसे बहुत धर्म निभाने वाला एक राष्ट्र है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, यहूदीज, all these religions are in our country. So Indian constitution gives, that is a freedom to choose any religion, any language, and any caste. Government doesn't interfere in this the particular field that is. So that's why India is a secular country. भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, किसी का पक्ष नहीं लेता. All the religions are equal in our country. All the religions have get the same respect. All the religions, that is get the same importance also. So it is a very important and basic features of our constitution, secularism. And the 11th number, that is a judicial review. It is very also the unique and very important features of our Indian constitution. Judicial review is also needed. Just मैंने बताया what is a amendment process. हमारे देश के अंदर लॉ बनाने का, अमेंडमेंट करने का, रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम है, वो सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन को दिया है, एंड दैट इज द पार्लियामेंट. और स्टेट लेवल पे है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं द पार्लियामेंट हैज गॉट द ऑल दिस पावर. उसके ऊपर भी एक कंट्रोल है. देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ही चालाक थे. एक का कंट्रोल एक के ऊपर रखा, इसका कंट्रोल उसके ऊपर रखा. इसलिए कोई भी एक पर्सन, एक इंस्टीट्यूशन, ये कल उसकी इच्छा इरादा बदल जाए और वो पूरे इंडिया के ऊपर टेक ओवर ना कर ले, कोई इंस्टीट्यूशन या एनी पर्सन. सो दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव द डिस्ट्रीब्यूटेड द डिफरेंट पावर्स. कि जैसे हमने पढ़ा, द पार्लियामेंट हैज द हाईएस्ट पावर, द वेरी strongest power, the parliament, the democracy, the parliament is just like a temple. So this parliament has got the very maximum power to amendment, to make the rules and regulation, remove any article from the constitution, add any article in the constitution. So parliament gets the very strong power, very important power. But the constitution judiciary also the supervision to the parliament. For example, कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा रूल्स बना दिया, कि कुछ ऐसा अमेंडमेंट कर लिया. फॉर एग्जांपल, दिस इज द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक रूल्स रेगुलेशन, बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड बेसिक फीचर्स ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जांपल,
secularism, right to freedom. That is the basic features of our Indian constitution. Parliament cannot change these features also. उनके पास powers है, that means it doesn't change the any rules. Particular कोई rules change कर सकते, but जिसको सॉल्व करते हैं बंधारण, जो संविधान की जिसको आत्मा बोलते हैं, मेन उसका जो रिसोर्स बोलते हैं, उसका जो मेन जो फॉर्मेशन होता है, द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द मेन फॉर्मेशन एंड मेन स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अगर वो इस तरीके से बदलाव करता है, पार्लियामेंट हैज पास सम कंट्रोवर्शियल आर्टिकल एंड सम कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स, सो द जुडिशियल रिव्यू कैन बी डन. वो आर्टिकल जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में. You all of you know the Supreme Court is the topmost court in our India, and also the state level, that is also the High Court. High Court has got the same power as the Supreme Court, but that the jurisdiction is only the state level. So the Supreme Court is it situated in the Delhi. So Supreme Court in the judicial review, that means in the judiciary. For example, के कोई main features है कि secularism ने remove कर दिया. Some government has removed the main features, and these features that challenge in the Supreme Court in the judiciary system. Judiciary system ने देखा, that is this is, and judiciary system can declare this amendment is unconstitutional. कि आपने ये जो चेंज किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आप चेंज कर सकते हो नहीं हो. So ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके ऊपर बैठा हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है हमारी जुडिशरी सिस्टम. तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक की चाबी दूसरे को, दूसरे की चाबी तीसरे को दिया. जुडिशरी सिस्टम कैन नॉट फ्रेम द रूल्स. जुडिशरी सिस्टम रूल्स नहीं बनाती, रूल्स बनाता है पार्लियामेंट. लेकिन पार्लियामेंट जो रूल्स बनाता है वो जुडिशरी सिस्टम देखता है कि दिस रूल इज इट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल्स बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन हमारा प्रीएम्बल है उसका कोई वायोलेशन तो नहीं होता है. देन आफ्टर इट गेट्स द अप्रूवल. उसके बाद ही ये रिमूव हुआ, उसके अंदर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था. दैट इज नॉट एनी टाइप ऑफ द अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन दिस आर्टिकल ऑफ द रिमूवल ऑफ द 370 और रिमूवल ऑफ द 35A. इसने चैलेंज भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज दैट इज इट इज नॉट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज द वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल वे. और अगर आप 35A को डीपली स्टडी करेंगे तो ये पूरा आर्टिकल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था. विदाउट एनी नॉलेज ऑफ द पार्लियामेंट ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट मोर देन 65 ईयर्स से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था कि ये जो आर्टिकल पार्लियामेंट का रूल्स है, any if you want to add any amendment and any rules and any article, so it has to pass the both houses. 35A, you cannot believe that 35A till to the 2019 it is not passed by any of the houses. और वो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा रहा था, and it is very controversial article that the Jammu Kashmir has got the power to whom to give that the citizenship of the Jammu and Kashmir. ये आर्टिकल बहुत ही कंट्रोवर्शियल था कि जम्मू कश्मीर को ये पावर मिलता था ये आर्टिकल के जरिए कि वो किसको सिटीजनशिप देंगे, किसको सिटीजनशिप नहीं देंगे. एंड दैट आर्टिकल्स, इट इज द सबसेक्शन ऑफ द आर्टिकल 370. द आर्टिकल 370 इज द मेन. ये उड़ गया तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया, हट गया. सो the removal of the article 370 is perfectly on the constitutional way. So the judicial review is also very important कि कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार या तो कोई इस प्रकार की कोई संस्था है कि कुछ ऐसे अमेंडमेंट ना कर दे जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स स्नैच अवे बाय द गवर्नमेंट. हमारा मेन स्ट्रक्चर है दैट इज डेमोलिश्ड बाय सम गवर्नमेंट. सो दैट्स व्हाई the judicial review is the necessary. The judiciary can supervision, can the control to the parliament according to the constitution. So these are the very basic and main features of our Indian constitution. So we have studied already the 11 features of our constitution.
12, 13 and 14. Three features are remaining, and these three features we will study in our next video. Thank you.